Hello third standard students, welcome back to our channel Vidyarthi. We were discussing about the lesson numbers up to 9999. Now coming to the worksheet 4, this is about the place value. तो अभी तक आप लोग अलग अलग प्लेसेस के बारे में समझ लिए, that is ones, tens, hundreds, thousands. Now new topic, that is the place value. तो ईच डिजिट का वैल्यू कितना होता है अलग अलग प्लेस में, वो हम आज पढ़ेंगे. ड्रॉ द abacus in your notebook and show the value of the encircled digit. अभी नंबर दिया है 5824, 2 को एनसर्कल किया गया. तो पहले abacus ड्रॉ करो. तो 10,000, 100, टेंस, वंस ऐसे लिखा है और 2, सिर्फ 2 का ही abacus बीड्स डालो और लिखो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2. कौन सा प्लेस में है? टेंस में है. तो इसके लिए 2 टेंस, 2 into 10 is 20. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 9084. So you write ones, tens, hundreds, thousand. Now 4 in ones place you have to put the bead, 4 beads. Okay. Now you have to write the place value of 4 is 4 कौन सा प्लेस में है? 4 ones है ना, 4 ones के प्लेस में है और उसका वैल्यू क्या है? 4 into 1 is 4. Okay. Now coming to question number C, it is 7253. Right, ones, tens, hundreds, thousand. अभी 7000 का प्लेस को सर्कल किया है. सो 7 बीड्स डालो. 1 2 3 4 5 6 7. अभी लिखो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 कौन सा प्लेस में है? 1000 का प्लेस में. तो इसके लिए 7 into 1000. सो 7000 का प्लेस में है, इसके लिए 7000 और 7 into 1000 is 7000. That is the place value. Now put ones, tens, 100, 1000, 4 in the tens place. So 4 beads in tens place. और अभी लिखो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 कौन सा प्लेस में है? 4 tens. Now 4 into 10 is how much? 40. Hope you are understanding. समझ में आ रहा है ना? अभी ones, tens, hundreds, thousands. अभी 3 is in a hundreds place. 1 2 3. तो अभी क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 कौन सा प्लेस में? 300s और 3 into 100 is 300. Now ones, tens, 100, 1000. Now 0 in tens डालने का नहीं है. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 इन विच प्लेस? टेंस. 0 टेंस और 0 into 10 is 0. Any number multiplied by 0 is 0. 0 into 10 is 0. Is it clear? So we have completed question number 1 of our worksheet 4. Now coming to the second question, same method, same
सम, लेकिन इधर अबैकस बीट्स नहीं डालने का है, डायरेक्टली लिखने का है. सो 7, फर्स्ट राइट द प्लेस, ones, tens, 100, 1000. So 7 is in which place? 1000. So place value of 7 is in thousands place, 7,000, or 7 into 1000 is 7,000. Now ones, tens, hundreds, 1000. Now place value of 8 is 8 in which place? Tens, or 8 into 10 is 80. Now coming to the question number C, ones, tens, 100, 1000. Now place value of 8 is 8 कौन सा प्लेस में है? हंड्रेड्स, और 8 into 100 is 800. ठीक है, समझ में आ गया है ना सब कुछ? Now coming to question number D, it is a ones, tens, 100 and 1000. The digit is 3. So place value of 3 is in which place? Ones, or 3 into 1 is 3. Now question number E, it is a ones, tens, 100, 1000, 0. Place value of 0 is in which place? Ones, or 0 into 1 is 0. Now last question, ones, tens, hundreds, 1000. It is the place value of 5. Place value of 5 is in which place? Hundreds, or 5 into 100, that is 500. Is it clear? So we have completed worksheet 4. Hope everyone understood till here the place value. Hope you have understood. Now coming to the worksheet 5, it is expanded form. Still one more topic, that is the expanded form. तो जो भी नंबर दिया गया है उसको एक्सपांड करके लिखो. So it is ones, tens, 100, 1000. तो पहले लिखने का है 3 in which place? 3 thousands प्लस, बीच में प्लस डालने का, 4 in which place? hundreds, plus 6 in which place? 6 tens, plus 2 in ones. ओके, अभी इसके न्यूमरल्स में लिखो 3000 प्लस 400 प्लस 610, मतलब 60, 2 ones is 2. So in 2 ways the expanded form is written. So ones, tens, hundreds, 1000, 4 thousands प्लस 6, बीच में प्लस डालने को भूलने का नहीं. So when you add you will get this number, 6 hundreds plus 2 tens plus 1 ones. Now 4000, isn't it? Plus 600 plus
2 10 is 20, 1 ones, that is 1. Now question number C, ones, tens, 100, 1000, 8 thousands plus 0 hundreds plus 0 tens प्लस 1 वंस. कभी कभी ये 0 रहेगा तो वो प्लेस के बारे में लिखते नहीं है. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है, तो आप लोगों को वो समझना चाहिए. नाउ 8000 प्लस 0 into 100 0, 0 into 10 0 and then 1. Now ones, tens, 100, only 100. So 6 hundreds plus 7 tens plus 3 ones. That is 600 plus 7 10 is 70, 3 ones is 3. Hope everyone is understanding. Ones, tens, 100, 1000, 9 thousands plus 0 hundreds plus 1 tens plus 8 ones. 9000 plus 0 hundred is 0, 1 tens is 1 and 1 tens is 10, 8 ones is 8. Now ones, tens, hundreds, 1000, 3 thousands plus 3 hundreds plus 0 tens plus 3 ones. Now 3000 plus 300 plus 0 10, that is 0 plus 3 ones, 3. Question number G, it is ones, tens, 100, 1000, 1 thousands plus 4 hundreds plus 6 tens plus 3 ones. That is 1000 plus 400 plus 60 plus 3. Now ones, tens, hundreds. So it is a 9 hundreds plus 9 tens plus 9 ones. That is 900, 9 tens is 90 and 9 ones is 9. Hope everyone understood the expanded form. Now coming to question number 2, write the numeral for the expanded form. Expanded form is given, you have to write the numeral. Now thousands place it is 7, 100 place it is 3, tens place it is 2 and ones place 1. So you have to go on asking on the right hand side which place is there. So what is the digit in that place? You have to identify. Thousands place 6, the hundreds place 0, tens place 4 and ones place it is 8. एक्सपांडेड फॉर्म में आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं, लेकिन न्यूमरल लिखने के वक्त वो जीरोज एंड ऑल यू आर नॉट राइटिंग. नाउ थाउजेंड्स प्लेस इट इज 5,
hundreds place 8, tens place 0, ones place 9. Coming to question number D, it is thousands place 4, hundreds place 2, tens place 1 and the ones place 0. Next, thousand place 9, hundred place 9, tens place 9, ones place 9. Thousand place 2, hundreds place 0, tens place 0, ones place 2. Next, question number G, thousands place 1, hundreds place 0, tens place 3 and ones place 0. Next, question number H, thousand place 3, hundred place 5, tens place 3, ones place 7. Thousands place 8, hundred place 1, tens place 1 and ones place 1. Question number J, thousand place 4, hundred place 0, tens place 0, ones place 0. So we have completed worksheet 5. That was about a expanded form. Hope everyone understood. सबको समझ में आया होगा, है ना? Okay then, bye. Thank you.